हॅलो सर. हा, मी तुम्हाला होस्ट केलंय ताई. ओके ओके सर. हां ओके, हा, बाय. हां. बाय बाय बाय. हॅलो नमस्कार तन्वी ताई. हॅलो नमस्कार. हाय. हॅलो तन्वी ताई. माझा आवाज सगळ्यांना ऐकू येतोय? मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? गुड इव्हनिंग तन्वी. तन्वी ताई, गुड इव्हनिंग. आवाज येतोय माझा? हो मॅडम, येतो. येतोय ना? ओके. हो हो. तन्वी मॅडम आहे ना, ऐकू येत नाहीये बहुधा. हॅलो तन्वी मॅडम. Hello. Hi, can you hear me? या हाय, गुड इव्हनिंग. या Good evening. Sorry, Yeah. there was some voice problem. Can you hear me now? या हिअर यू. Okay. वेलकम टू मनोस्वास्थ्य संवर्धन गट. मनोस्वास्थ्य संवर्धन गट पे आपका स्वागत है. Thank आप you. अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? हेलो हाय, Sure. आई एम अनुपमा जोशी राव. नाइस टू मीट यू. या तो हम अपना ये शुरू करते हैं. पहले 3 ओंकार से हम स्टार्ट करते हैं. फिर हमारी एक ग्रुप की प्रेयर होती है, वो मैं बोलती हूँ. फिर आपकी पहचान सबसे करवा देती हूँ और फिर आप स्टार्ट कर दीजिए. तो वेलकम ऑल, जो जिसने आज ये ज्वाइन कर दिया है. आज हमारा गट मराठी लैंग्वेज की बजाय हिंदी और इंग्लिश में होगा. तन्वी मैम स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी. या चलो हम स्टार्ट करते हैं. ओके फाइन.
3 ओंकार से हम स्टार्ट करते हैं। हमारी ग्रुप की प्रेयर है, वो अभी मैं बोलती हूँ। वो मराठी में है, आप समझ लीजिए जो भी है। हे विश्वशक्तीनो, मी आपणास मनापासून वंदन करते. आपण मला आणखी एक सुंदर दिवस जगायला अनुभवायला दिल्याबद्दल आपले आभार मानते. कालचा दिवस खूप सुंदर होता. आजचा दिवस सुद्धा मी खूप छान घालवणार आहे. हे शक्ती, या क्षणाच्या आधी माझ्याकडून कळत नकळतपणे कोणीही दुखावले गेले असतील तर त्याबद्दल मी त्या सर्वांची आणि तुमचीही क्षमा मागते. आणि या क्षणापासून कोणीही माझ्याकडून दुखावले जाणार नाही याची मी काळजी घेईन. तसेच मी स्वतःच्या आणि इतरांच्या झालेल्या चुकांसाठी अगदी मनापासून तुमच्या साक्षीने माफ करते. हे शक्तींनो, माझ्या हातून मानवतेच्या कल्याणासाठी आणि निसर्ग संवर्धनासाठी भरीव कार्य घडू दे. माझी प्रार्थना आपण स्वीकार करावी व माझ्या मनोस्वास्थ्य संवर्धन कार्यास बळ द्यावे. वंदे विश्वशक्ती. नमस्कार सर्वांना। आज हमारे ये मनोस्वास्थ्य संवर्धन गट पे अपना सेशन लेने के लिए तन्वी तन्ना मैडम आई है। उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं करवा के देती हूँ। तन्वी मैडम ने she is a practicing clinical psychologist and Ayurvedic therapist with more than 10 years in the field of mental health. She works with children and teens having a emotional, behavioral, or academic issues like low attention span, hyperactivity, exam anxiety, or anger issues. She also helps adults struggling with addiction, depression, anxiety, stress, and marital conflicts. She regularly conducts workshops on social emotional intelligence, anger management, rational parenting for families and schools. विथ शी आप सबने पढ़ा ही होगा कि उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री ली है और वह एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग किया है। और एक मिनट है तन्वी मैम, कोई ज्वाइन हो रहा है। और अर्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क से उन्होंने आरईबीटी का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। She is a practice at her clinic located in Kandivali, Mumbai. She firmly believes that emotional disturbance is a self-created and one can get better by changing their irrational and negative thoughts. Wow, very nice. खूब अच्छा लगा ये सुन के कि irrational belief पे आप जो इतना काम करते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। तो ओवर टू यू तन्वी मैम। एंड आज का उनका विषय है पेरेंटिंग स्टाइल्स, पालकत्व की एक शैली, कैसे पालकत्व निभाना चाहिए, इसके बारे में आज हमसे वो बात करेंगे। ओवर टू यू मैम। मैम मेरा वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, अच्छे से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? ओके जी ठीक है। ओवर टू यू मैम, आप मैडम, स्टार्ट कर मुझे सकते आपकी हेल्प लगेगी। आप हैं। स्क्रीन शेयर करने के लिए आपको मुझे को होस्ट करना पड़ेगा। हाँ। क्या अभ्यास है ना? Good evening, everyone. Thank you, Anupama ji, for that warm welcome. Thank you, everyone, for joining us today. Just trying to understand what kind of audience we have. Do we have mostly parents?
पेरेंट्स है, प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स है। आज हमारे साथ कौन है? Let's make Parents. this an interactive session. Parents. Okay, parents. How old is your child? She's in 12th. Oh, 12th. she's in 12th. Okay. तो अभी दिया finish हो गया क्या? No, she's preparing for her NEET exams now. Oh, she's preparing for a NEET exams. Okay. Yeah. Best wishes to her. Yeah. Thank you. Okay, so we'll start our session today. Anupama ji, I need your help for sharing the screen. हाँ बोलिए मैम। हाँ हेलो, आवाज आ Yes, रही है आप मैम? मुझे होस्ट, हाँ आप मुझे होस्ट बना सकते हो तो मैं स्क्रीन शेयर हाँ कर हाँ दूँ। बना देती हूँ। Thank you. हाँ, do it. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, sure. प्लीज सब लोग अपना साउंड म्यूट कर दीजिए। अपर्णा ताई आपला साउंड प्लीज म्यूट कराल। झूठ बोलना पड़ेगा तो उस मैम चीज दिखाई को दे मैं रहा है avoid सब। ताकि मेरा मन भी ना खराब हो, इनका मन भी नहीं खराब। सुपर वुमन, सुपर वुमन और हैप्पी लाइफ। हाउ टू डील विद टॉक्सिक। Fine there. Yeah, we can see. अपर्णा ताई तुमचं साउंड प्लीज म्यूट कराल। मैम क्या Go ahead. सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है। Okay, great. So let's start with a beautiful poem. ये poem ब्रूस बॉल्डविन ने लिखी थी. It is about parenting styles. It's about parenting. So once upon a time, there were two beautiful butterflies who were delighted when their own baby caterpillar came into the world. As most parents do, they look forward to seeing their own baby caterpillar came into the world. As most parents do, they look forward to seeing their young one return into a butterfly, just like they were. Because they cared so much, they gave their child everything a young caterpillar could possibly want. They were very busy trying to fill his unlimited wants. At last, they saw the cocoon breaking away. To their shock and dismay,
The young caterpillar emerged without changing at all. The small caterpillar greeted them with an explanation. It's too tough being a butterfly these days. You have to fly on your own and find your own food. There is no one around to take care of you. I have decided to stay just the way I am and keep you company. To the parents' distress. That is just what the apprehensive young caterpillar did. So parents need to, why are we talking about parenting style today? Because parents need to accept the challenge of family discipline, or we may find that we have an immature caterpillar or several of them hanging around, eating us out of house and home indefinitely, literally, figuratively, and disappointingly. We must realize that as parents and teachers, we are the most important people on the face of earth for our children. What we think of them, say to them, and do not say to them. Our actions and reactions are more important in shaping of their development than what anyone else in the world says or does to them. So did you all listen to this poem? What do you think happened to the caterpillar here? It got used to the comfort. You are right. You're absolutely right. It got used to the comfort. So what is parenting? Anyone? हम सब करते हैं. There are no right or wrong answers. We all do it all the time. How do we learn about parenting? So we largely learn about parenting, through what we have experienced as children. Right? How we were raised by our parents, how we were raised by our grandparents. That is what parenting is. We are largely influenced by how we were raised by our caregivers. But why is understanding parenting style so important? Because our children are also born with a temperament. A temperament means personality. In Instagram language, it could also mean filters. The filters that we use to understand the world, how we see the world. Do we see it as a safe space or do we see it as a hostile space? So parenting is nothing but interaction of our personality with the personality of our child. There is a continuous interaction between the two. Can anyone name what kind of parenting styles we have? Any guesses? Authoritative. Yes. Authoritarian. Very nice. And permissive and Very uninvolved. nice. Uninvolved. Okay. Very nice. Anybody else would like to try? Dominating. Dominating. Okay. How do you think earlier generation parents were? They were mostly easygoing, loving, dominating. कैसे थे? Did we all have strict parents or lenient parents or permissive parents? Strict. Okay, strict. Dominating. Dominating. Okay. Loving. Loving. Very nice. Anupama ji. Combination of everything. Combination of everything, Minaji. You were lucky. So let's understand what parenting style is. Okay, तो जैसे आप लोग ने कहा कि strict parenting style होता है, permissive होता है, loving होता है. So what is strict parenting style? So strict parenting style is also known as authoritarian parenting style.
जहां पर कुछ प्रकार के हमारे फिल्टर्स होते हैं, जैसे बिलीव्स होते हैं, like getting angry is effective, a child is his or her behavior, children must do well without praise and rewards, punishment is effective, children must never disagree with parents and they should not disobey. तो जब हम ये प्रकार के बिलीव्स रखते हैं हमारे चिल्ड्रन के साथ, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? तो हमारा व्यवहार, जैसे हमारा बिहेवियर कैसा होता है? हम बार बार डिमांड करते रहते हैं, डिमांड कंटिन्यूअसली, ठीक से बैठो, सामने जवाब मत दो, मैं आपसे बड़ी हूं, इट इज माई वे, punishes harshly, values obedience, discourages independence and individuality, and exercises physical punishment. और फिर उसका आउटकम क्या होता है? How we parent our children leads to some kind of outcome, right? So when we tend to be very, very strict with our children, what they are learning is that getting angry is effective. कि चिल्ला चिल्ला के बात करना is okay. जब कोई हमारी बात नहीं सुनता है, तो it is okay to be abusive. It is okay to slap them. You know, it also means that प्रेज करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है, तो जरूरी नहीं कि हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. The children must never disagree with parents or should not disobey. तो जब बहुत ही अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं या स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, तो चिल्ड्रन ये बिलीव करने लगते हैं कि बड़ों से हम निगोशिएट नहीं कर सकते हैं. That compliance is very important. Being a follower is normal. That getting angry is also normal. Sometimes these kids remain angry, but they suppress those emotions. And sometimes they start pushing others, when they go down to play, or they get angry with others. They also tend to become bullies. Such kind of parenting style is also known as limits without freedom. कि हमें खाली हमारे चाइल्ड पे बहुत सारे लिमिट्स रखते हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, और हम उनको कोई फ्रीडम नहीं देते हैं. They also believe that parents here believe that they have more control and power about children, and that children should not have any opinion. What is permissive parenting style? So ज्यादातर permissive parenting styles होते हैं, not blaming anyone here, but permissive parenting style we can see largely in families who are जहाँ पे दोनों they're raised by grandparents. Okay, so grandparents tend to be very loving and very nurturing. Or when one of the parent is missing, like one of the parent is working abroad or in another city, or there is a loss or a separation or death in the family, or the family is going through a lot of stress, hospitalization, and parents are busy taking care of situations. So that time we see that a lot of parents tend to do permissive parenting unintentionally because it is easy. Okay. So what are the beliefs of a permissive parent? A permissive parent believes that children should never be frustrated or experience any discomfort. All punishment is wrong. Children should get to do whatever they want. It is easier to give in than argue with a child. It is best to avoid conflict. So a lot of times permissive parents को लगता है कि बच्चों को रोने नहीं देना चाहिए. ज्यादातर even my grandmother will be like, अरे उसको क्यों रुला रही है, उसको चुप कर दे, वो तो छोटी बच्ची है, देख कब से रो रही है, give her what she wants, she's very young. And then what are the behavior when you use those filters कि बच्चों को नेगेटिव फीलिंग्स नहीं एक्सपीरियंस कराने चाहिए, उनको पेन में हम नहीं देख सकते हैं. What are the behavior that we practice? Sometimes we set no guidelines, we provide no structure, we assert no authority,
remain distant and uninvolved, use excuse for not spending quality time with the child, allow child inappropriate decisions, don't exert control over the behavior. So ज्यादातर ये behavior हो जाता है कि we also tend to replace our absence with lot of materialistic gifts. ज्यादातर हम देखते हैं कि mother who go to work normally they come back with lot of khana or some small gifts whenever she feels guilty. So she tends to replace her quality time, you know, in terms of materialistic gifts, or tend to give the child a lot of freedom because she's not at home and she's taking care of other responsibilities. What is the likelihood outcome of this parenting style? जब हम ज्यादातर permissive parenting approach रखते हैं तो हमारा outcome कैसा होता है? Let's see that. The child may lack self-control. जैसे हमने poem में देखा, right? The child got very comfortable, lacks self-control, remains immature in their thinking process, may be aggressive at home, may become impulsive, मेरी मन मर्जी का होना चाहिए, may have, you know, may become disobedient, overly demanding, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, you know, may be disrespectful to adults, may give up things easily, okay, may not get along well with others, may not get along well at school, may not follow instructions at school, poor school performance, और झूठ बोलना, बहुत stubborn हो जाना. These are all the outcomes of permissive parenting, जिसको हम कहते हैं freedom without limits. Anyone relate to either of the parenting styles here? Okay, let's go to the next one. No expectations. No expectations, yes. और यूजुअली मतलब नर्चरिंग रहता है, वार्म रहता है वो पेरेंटिंग स्टाइल. Correct. No expectations Correct. from There is child. high warmth. You are absolutely right. There is high warmth, but control बिल्कुल zero होता है. Absolutely, yes. Now, let's understand the third type of. So I have given you the beliefs, right? We did the beliefs. So there's a mistake here. So the third type of parenting style here is a more flexible parenting style, okay? A more effective parenting style that is authoritative. So what is authoritative parenting style? कि हम वो हिटलर का रोल भी नहीं लेते हैं जो अथॉरिटेरियन डोमिनेटिंग पेरेंटिंग में होता है, और हम लेड बैक भी नहीं होते हैं जो हम परमिसिव में रहते हैं, but we are here in the middle, okay? So children needs clear expectations, reasonable rules and consequences, encourages independence and individuality. Children deserve to be loved and assured of their worth and value. So what is the belief style here? कि ज्यादातर यहाँ पे हम बैलेंस रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं, काइंड एंड फर्म रहते हैं हमारे अप्रोच में. It is not perfect. It is a more balanced parenting styles. And the most important thing here is our parenting style matches our child's parenting style and developmental stages. They know that children will make mistakes and that children will misbehave most of the times, but they do not give them big threats, big reactions, upset about small things. They don't compare. Rather, they remain firm in their parenting strategies. So how is their behavior when they are practicing authoritative parenting style? They set reasonable standards. They have reasonable expectations कि हाँ 4 साल का बच्चा तो 4 मिनट के लिए ही यहाँ एक जगह पर बैठ सकता है, फिर वो घूमने वाला है. या 4th ग्रेड का बच्चा यही चीज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है. They encourage independence and individuality. ठीक है, आपको आज क्या पहनना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, आपको कौन सी हॉबी पार्टिसिपेट करनी है.
They enforce rules firmly and consistently. उनको डर नहीं लगता है बच्चे के टैंट्रम से, but they remain firm. जब वो ना बोलते हैं तो they stick to their nose. ये sorry, this is not allowed. आप अभी नीचे नहीं जा सकते हो. And they are okay with the child throwing a tantrum, and they are able to sit कि ठीक है आपको जितना रोना है आप रो सकते हो, बट आई एम सॉरी मैं आपको ये अभी कैंटीन नहीं दे सकती हूँ. एंड दे स्टिक टू इट. दे अलाउ चॉइसेस. दे बिल्ड मोर डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप. देयर इज मोर ऑफ गिव एंड टेक in their relationship, and they recognize individual rights. They see the child as an independent person, not as an extension of them or their ego कि तुम मेरा बेटा हो तो तुम यही कर सकते हो, या तुम मेरी बेटी हो तो तुम ये नहीं करोगे. They don't see their child as an extension of their ego. They try to reason with their child when they misbehave. They focus more on being present, on bonding with the child, on building trust with the child. They are not abusive, shouting, threatening, or wanting the child to comply with them all the time. They tend to encourage questions, and their biggest focus is they keep bonding with the child. What do you think is the outcome of an authoritative parent? जब हम flexible रहते हैं तभी हमारे तभी हमारा स्वभाव और उसका आउटकम कैसा होता है हमारे बच्चे के स्वभाव के साथ. तो they become more competent. They learn to trust themselves. They learn to trust their parents. They know कि मम्मी चिल्लाएगी लेकिन फिर मुझे माफ कर देगी. She will give me another chance. They remain competent. They remain responsible. Independent होते हैं. They have high self-esteem. खुद पे बिलीव कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ. They have greater capacity to control negative emotions. जब गुस्सा आता है, डर लगता है, तो वो खुद को रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके पेरेंट्स भी नेगेटिव इमोशंस बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. तो ये टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल को हम कहते हैं फ्रीडम विद लिमिट्स. Does anyone here resonate with authoritative parenting style? Yes? Yes. Yes. Okay. So what is important here is to understand कि 3 प्रकार के जब हम पेरेंटिंग स्टाइल करते हैं, तो जैसे अनुपमा जी ने कहा, जब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल होता है, माय वे और हाई वे या हिटलर स्टाइल पेरेंटिंग स्टाइल होता है, तो हमारा वार्मथ बहुत ही लो रहता है. जैसे मैंने इंडियन कल्चर में देखा है कि हम बहुत हेजिटेट करते हैं हमारे बच्चों को हग करना, किस करना, या ऐसे लगता है अभी तो बड़ा हो गया, इसको हम गले नहीं लग सकते हैं. मैंने काफी फादर्स को देखा है जो अपनी डॉटर्स को शादी के दिन, विदाई के दिन भी हग नहीं कर सकते हैं या उसके बाजू में नहीं बैठते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट एवरी फैमिली हैज डिफरेंट वैल्यूज, राइट, बट स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंटल वार्मथ बहुत ही कम होता है और ज्यादा कंट्रोलिंग होता है. हाई लेवल ऑफ टोन रहता है, आंखें बड़ी बड़ी होती है, ज्यादा बहुत ही एंग्री पेरेंट्स कभी कभी लगते हैं. परमिसिव में क्या होता है, तो यस यहाँ पे वार्मथ ज्यादा होता है और वार्मथ वर्ड्स में भी होता है. यस बेटा टेक केयर, यस बेटा आपको ये नहीं अच्छा लगता है, हम ये नहीं करेंगे. बट लो लेवल ऑफ कंट्रोल होता है जहाँ पे जब घर में कोई एक ही बेटा होता है या एक ही बेटी होती है, तो 4 बड़े एडल्ट्स उसको पेरेंटिंग करने लगते हैं, सब अपनी तरीके से उसको पैम्पर करते हैं, तो कंट्रोल बहुत ही कम हो जाता है. थर्ड काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल जो हम बोलते हैं ऑथोरिटेटिव या बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल, उसमें दोनों इक्वेशन हाई होता है. जैसे पेरेंटल वार्मथ, देयर इज लॉट ऑफ हगिंग, किसिंग, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन, और हाई लेवल ऑफ कंट्रोल भी होता है. तो रिसर्च ये कहता है कि जो पेरेंट्स ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं वर्बल अप्रिसिएशन या फिजिकल अफेक्शन, वो बच्चे ज्यादातर अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. और जो फैमिलीज में पेरेंटल वार्मथ कम रहता है या हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं,
तो वहां पे बच्चों को ज्यादा एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, या एंगर या एंजाइटी इश्यूज होते हैं, या बच्चे को लो सेल्फ एस्टीम होता है। सो लो पेरेंटल वार्मथ क्या होता है? जब हम ज्यादातर क्रिटिसाइज करते रहते हैं बच्चों को, या डिसअप्रूव करते रहते हैं, या रिजेक्ट करते हैं, या कंपेयर करते रहते हैं, तो बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत नुकसान हो सकता है। सो रिसर्च हैज शोन कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स उन बच्चों को होती है जहां पे पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, माई वे ओनली, लो लेवल्स ऑफ वार्मथ होता है, ओवर प्रोटेक्शन। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दे डू इट आउट ऑफ लव, दे डू इट अनइंटेंशनली, but sometimes it can have really big repercussions on the child's personality. Like I remember my grandmother will not even let my child get on the table. She's so scared कि वो गिर जाएगी तो उसको सर पे लग जाएगा तो, और वो उसको, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इट क्रिएट्स एंजाइटी इन माई चाइल्ड। नहीं, मैं डर जाऊंगी तो, मैं गिर जाऊंगी तो, मुझे लग जाएगा तो। सो ओवर प्रोटेक्शन भी is not very helpful. Yeah, over involvement, which we do out of love and nurturing, is also not very helpful. Unintentionally, parents don't realize, but they do tend to favorite one child over the other. And parents don't realize that they do it unintentionally, but the child knows it. What is important here is we stick to our parenting style, which is very very important. ज्यादातर मैं इंडिया में देखती हूँ, हमें सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आज भी काफी फैमिलीज है बॉम्बे में, पुणे में, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इन लॉज साथ में रहते हैं, कभी कभी सिस्टर इन लॉज, जेठानी, नड़न भी साथ में होते हैं। तो एक बच्चे को एक विलेज मिलता है, सोसाइटी मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक ड्रॉबैक मैंने ये देखा है, जब फैमिली में सभी लोग अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। जैसे कि पिताजी, ज्यादातर मैं देखती हूँ डोमिनेटिंग पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन होती है, या मम्मी होती है फिर वो परमिसिव पेरेंटिंग हो जाती है, या ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादातर परमिसिव हो जाते हैं, फिर वन पर्सन इज ट्राइंग टू बी बैलेंस्ड एंड अथॉरिटेटिव। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स फॉलो करते हैं, तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं किसकी बात सुनूं, वो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। हाँ, पापा के सामने मैं आइसक्रीम मांग सकता हूँ, मम्मी के सामने मैं आइसक्रीम नहीं मांग सकता हूँ, दादी मुझे टीवी देखने देगी, ये लोग मुझे टीवी नहीं देखने देंगे। तो दे टेंड टू लाई, दे टेंड टू मैनिपुलेट, और वो ये सब बिहेवियर्स करने लगते हैं। दे डोंट रियलाइज कि मुझे कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है। तो पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल का सबसे मेजर पॉइंट ये है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। अगर दादी ने ना बोला तो मम्मी को भी ना बोलना है, पापा को भी ना बोलना है, सबको ना बोलना है। रूल सबके लिए सेम होने चाहिए, जैसे हमारे वर्किंग स्पेस में होता है, राइट, कि सबको 9 बजे का रिपोर्टिंग होता है। किसी की ऐसा नहीं कि कोई 9:30 को आ सकता है, कोई 10 बजे आ सकता है। एवरीबडी gets to come on the same time. So that is very important that we remain consistent. Authoritative म्हणजे consistent, कि no means no. Now help me understand what is effective parenting practices and what is ineffective parenting practices. पहले मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे देखकर बताइए कि इफेक्टिव पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन से हैं। कैन यू लिस्ट सम? Punishment? No. Okay. Permissiveness? Yes, to some extent. Okay. Appreciation and respect? Yes. Moralizing? No. Yes, I think to some extent. Okay, no. Who said no? I heard someone. Yeah, I How? guess moralizing always like you should do like this. This is the norm is not a Correct. good thing. There should be some flexibility. Very good. Yes, you are right. Neglect? और एक्चुअल पनिशमेंट में सुधा थोड़ा पनिशमेंट तो चाहिए, ऐसे नहीं होता है कि बिल्कुल नहीं।
ये भी है, some extent it's good. I agree. To some extent, it is definitely good, but it should be age appropriate, Anupama ji. Yelling and disrespect. No. Okay. Name calling, labeling. No. एकदम lazy आहे. No. No. Over protection. No. नहीं उसको अकेले मत जाने दो, उसको अकेले मत करने दो, वो बहुत छोटा है, उससे नहीं होगा, उसको क्या समझेगा. No. Encouragement. No. Yes. Encouragement is Encouraging, yes. effective, Yes. right? Yes, Yes. effective. Hitting. ऐसे कर दिया क्या फर्क पड़ता है, अभी तो कैसे तो सुनेगा वो, वरना सुनेगा नहीं. No. Sarcasm. No. We are all advice giving. Mm. Yes, I think to some extent. If it is Not done, always. yes, Not not some, not always. always. If it is done occasionally, strategically, yes. Otherwise, you'll be surprised. It is best way to lose a child's connection. Logical consequences. जैसे कि कल तूने बहुत टीवी देखा है, आज तुझे टीवी नहीं मिलेगा. या कल तूने बहुत ही चॉकलेट खाई थी, आज तुझे नहीं मिलेगी. Yes. Yes. Okay. Lack of follow through. मैं रात को 9 बजे आके तेरा होमवर्क देखूंगी और फिर मैंने नहीं देखा. No. No. Right. Okay. Too many no's. तुम ऐसे मत बैठो, तुम ऐसे मत खाओ, तुम ऐसे बात मत करो. No. Reasonable structure. Yes. Yes. Consistent rules. Yes. Over explaining, lecturing. No. 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 Yeah, this is what I have seen in my clinic. Most parents struggle with over explaining. Most parents struggle with lecturing. उन्हें लगता है कि लेक्चर देंगे तो बच्चा ज्यादा समझेगा तो बच्चा ये बिहेवियर नहीं करेगा. But unfortunately, that is not true, because lecturing is an adult tantrum. Because I want to vent out, I want to vent out, I want to vent out. So I keep lecturing and shouting at the child till I feel better. But the child is feeling very sad. The child is feeling very hurt. The child is feeling very disrespected, and the message is lost. Limit and routines. Yes. Yes. Nagging. कर भाई कर, कितनी बार बोला, सुबह से 10 बार बोली, अभी तक नहीं कर रहा है, काय झालं? No. 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 But we are guilty of doing it, right? Yes. Personalizing. हाँ, तू मेरे साथ ही ऐसा करता है, तू मेरी बात तो नहीं मानता है, मौसी की बात तो मानता है, दादी की बात दादी के सामने भी अच्छे से रहता है, मेरे साथ ही ऐसा करता है. That is personalizing. Is that effective or ineffective? It's not effective. It's not effective, right? Empathy. Yes. Yes. Can somebody tell me what empathy is? I think validating their feelings, making them feel that we understand them, Yes, you are right. and actually understanding, trying to Yes. Yes. understand them, Yes. and they should be able to feel that we have understood what they are feeling or going through. Very nice, Ajayeshwari. Yes, तो empathy मैंने देखा है काफी लो है इंडिया में among parents. जैसे कि yes, आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, मैं कुछ बनाती हूँ, कैन यू वेट फॉर 10 मिनट्स, कैन यू वेट फॉर 15 मिनट्स. या आज आपको स्कूल में बहुत डर लगा क्योंकि टीचर ने आपको रिमार्क दिया, ठीक है, और क्या हुआ मुझे बताओ. अच्छा, आज आपकी क्रिकेट मैच है, यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट योर क्रिकेट मैच. ओके, कौन जीतने वाला है, आप आज पहले बैटिंग करोगे, आपको क्या करना अच्छा लगता है,
So empathy is very, very important. It is sometimes just repeating your child's feeling and it increases connection. और आप जितनी empathy try करोगे, your kid will feel connected with you and there are less chances of misbehavior. So what is our job as a parent? मैंने कहीं पे पढ़ा था, parenting is more about a parenting behavior rather than a child's behavior. तो हमारा जॉब क्या है एज अ पेरेंट? कि हमें हमारे बच्चे के बिहेवियर्स को कंट्रोल करना है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को, राइट? जैसे आर्ग्यूइंग, कंप्लेनिंग, पाउटिंग, अब्यूजिंग, फाइटिंग, टेम्पर टैंट्रम्स, ये सब बिहेवियर्स हमें रिड्यूस करने हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें ये बिहेवियर्स रिड्यूस करने हैं. एनकरेज गुड बिहेवियर कि यस, टाइम पे उठना है, चीजें ठीक से रखनी है, होमवर्क करना है, सॉफ्टली बात करनी है, हेल्दी फूड खाना है, बीइंग पोलाइट एंड नाइस टू पीपल. और हमारा थर्ड रोल है is strengthening our bond with our child. It is not about the number of hours you spend with the child, but it is the quality of your hours with your, with your child, which is very, very important. जब आप अपने बच्चे के साथ हाफ आवर बैठ के लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, गार्डन गए हो, तभी आप क्या बात कर रहे हो? क्या आप खाली एडवाइस दे रहे हो, खाली करेक्ट कर रहे हो? तो देन यू आर नॉट स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड. अगर आप खाली एडवाइस दे रहे हो तो यू आर नॉट स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप विद द चाइल्ड. नहीं, मैं उसके साथ बाहर जाके होटल में बैठ के मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं रोज उसको गार्डन में बाहर लेके जाती हूँ और मैं उसको बाहर ही समझाती हूँ ये सब नहीं करना चाहिए. Now this can be avoided. Not every outing should be about correction or lecturing to your child. So our job as a parent is to be a role model to our child. I cannot, eat a bag of chips and tell my child, oh, लेकिन तुम नहीं खा सकते हो. Because children are highly influenced by what I say, what I do, and what I expect. Rather, they are the first ones to tell me, मम्मी आप तो मुझे बोलती हो लेकिन आपने तो नहीं किया, आप तो नहीं कर रहे हो. So it is very important that your words and actions match as a parent. So why do children misbehave? हमें क्यों लगता है कि बच्चे misbehave क्यों करते हैं? तो research ने ये conclude किया है. There has been a very there was a research long time ago, I think by Dyer now, which said that ज्यादातर children इसलिए misbehave करते हैं क्योंकि उन्हें attention चाहिए, या उनको पावरफुल फील होना है, या उनको रिवेंज करना है, या इनएडिक्वेसी फीलिंग्स है, इसके लिए वो लोग मिसबिहेव करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अटेंशन. ओके, सो यू विल नोटिस चिल्ड्रन हु वांट अटेंशन, उनकी ज्यादातर बिलीफ ये होती है that I belong only when I'm noticed, when I feel important. So a lot of children in my classrooms, sometimes they keep fidgeting with their pencils, they keep moving around, they will not raise their hands and they will answer in class. Okay, so why? Because they want to have their attention. Children don't realize whether they are getting negative attention or they are getting positive attention. So the moment the father will enter, the child will throw a Bisleri bottle, or the child will again start fidgeting, throwing toys here and there, so that the mother will correct or talk something bad about the mother to the child. This is a child seeking negative attention, right? Because the child doesn't know कि उसको पॉजिटिव अटेंशन मिल रहा है या नेगेटिव अटेंशन मिल रहा है. चाइल्ड को खाली इतना पता है कि मेरे नाम का जप हो रहा है, आर्यन ऐसे मत बैठो, आर्यन ऐसे टॉयज को नहीं फेंकता है. This itself, the child is getting attention and feeling important. So when your child is coming from attention problem, what you can do is give them more positive attention. Ignore some small negative behaviors like fidgeting, okay, or talking in middle sometimes. Set up routines. Just encourage the child. We'll talk about it later. Redirecting. अच्छा ठीक है, अंदर से ये चीज मेरे लिए लेकर आ. और सेटिंग अप स्पेशल टाइम्स, जैसे कि आपको पता है कि रोज शाम को पिताजी घर पे आते हैं, उसके सामने ही मिसबिहेवियर होता है, तो उसके पहले हैव अ 10-15 मिनट ऑफ बॉन्डिंग टाइम विथ योर चाइल्ड. दैट विल हेल्प him or her feel special.
तो हमें कैसे पता कि बच्चा अटेंशन सीक कर रहा है कि नहीं? अगर आपको एज अ पेरेंट यू आर फीलिंग वेरी annoyed and irritated with your child, then definitely your child is coming from attention problem. Sometimes attention can be as simple as कि आप अपने child को पिकअप करने गए हो स्कूल में और आपने ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दिया, अरे उसने आज भी लेट उठा था, उसने आज भी नाश्ता नहीं किया. द चाइल्ड इज फीलिंग इम्पोर्टेंट, द चाइल्ड इज गेटिंग अटेंशन. या आप अपनी फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहे हो, अपने बच्चे के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, सो देन द चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ अटेंशन, बिकॉज आप उसकी बुराइयां उसके सामने कर रहे हो तो उसको अच्छा लग रहा है. अवॉइड डूइंग दैट. Always appreciate your child in front of others, and always complain about your child in when he is not around. The second reason why your child misbehaves is power. Power is normally seen in middle school children or adolescents, okay, where I belong only when I am in control or proving no one can boss around. It is also seen among 6 and 7 year olds. जब बच्चा किसी के सामने ही मिसबिहेव करता है, घर पे गेस्ट आने लगा, एंड देन द चाइल्ड विल बी लाइक, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं पीना है, मुझे ये नहीं करना है. सो द चाइल्ड इज सीकिंग पावर हियर. So how do you think a parent can manage this? Take charge by acting and not reasoning. What is important here is जब आपका बच्चा temper tantrum throw कर रहा है या scene create कर रहा है, it is best that you remain quiet. It is best that you act rather than not reason. Because talking increases struggle. You have to be quiet and use more of action. Respond with kind but firm respect. Sorry, ये नहीं हो सकता है अभी, ठीक है, आपको नहीं खाना है, इट इज ओके. गिव लिमिटेड चॉइसेस. यू कैन डू बेटर. स्टॉप शाउटिंग बेटा. रीडायरेक्ट द चाइल्ड. ठीक है, अभी आपको मॉल से नहीं निकलना है, मैं यहीं पे बैठी हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको ये चीज नहीं दे सकती हूँ. जस्ट बिकॉज द चाइल्ड इज क्रिएटिंग अ सीन, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके रूल्स ब्रेक करने हैं और कंप्लाई करना है. बिकॉज बच्चा यही चाहता है कि अगर उन्होंने आपको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया या आपको स्पॉट में रख दिया, तो देर आर हाई चांसेस कि उसको वो केक मिल जाएगी या उसको वो गेम मिल जाएगी. But that is even more reason that you have to be consistent in front of your child and not give it. The third reason why children misbehave is revenge. Revenge. I belong only when I hurt others. अभी मेरा connection मेरे mom dad के साथ या मेरे भाई बहन के साथ ऐसा हो गया है कि मुझे तभी अच्छा लगता है जब मैं उनको hurt करता हूँ, because मुझे अंदर से बहुत hurt feel होता है. There is a desire to get even. अब मैं बदला लेकर ही रहूंगी. उसने मुझे शेयर नहीं किया, मैं भी उसके साथ शेयर नहीं करूंगी. तो जब ये काइंड ऑफ कनेक्शन हो जाता है तो पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? ऑलवेज टॉक एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर फीलिंग्स. ठीक है, आपको शेयर नहीं करना है क्योंकि आपकी बहन ने भी शेयर नहीं किया है, इट इज ओके, टेल मी मोर. अच्छा, आपने आपकी बुक आज आपने होमवर्क नहीं किया टीचर का बिकॉज उन्होंने आपको मॉनिटर नहीं बनाया, ठीक है, जस्ट लिसन टू द चाइल्ड स्टोरीज, रिफ्लेक्ट, वैलिडेट, एम्पथाइज. डू नॉट क्रिटिसाइज और गिव देम पनिशमेंट फॉर हैविंग हार्श फीलिंग्स. ये मत कहो कि आपको जेलसी नहीं फील करनी चाहिए. डू नॉट एडवाइज. बिल्ड ट्रस्ट. इट इज ओके टू फील लाइक दैट. प्रैक्टिस शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स. एनकरेज देयर स्ट्रेंथ्स. हाँ, लेकिन मुझे याद था आपने लास्ट वीक तो आपके नेबर के साथ शेयर किया था. बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कभी कभी बच्चे रिवेंजफुल हो जाते हैं बिकॉज उनको नहीं पता कि दे आर गुड, that they are good inside, that it is okay to have these feelings. It is one of the very challenging behaviors when the child comes from revenge, but it is possible to manage it. The last one is when the person feels very, very inadequate. A lot of parents come to the clinic saying कि बहुत जल्दी हार मान जाती है, ये ट्राई नहीं करती है, ये बहुत जल्दी गिव अप कर देती है, उसको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है. So I belong only when I convince others not to expect anything from me, since I am helpless
and unable. Escape for a discouraged child. Normally, we see inadequate wali feelings among children who have permissive parenting at home or who have authoritarian parenting style at home. तो क्या करना चाहिए? Build very short goals. हम खाली 2 लाइन लिखेंगे, हम खाली 2 बार बैटिंग करेंगे, हम खाली 5 मिनट के लिए जाएंगे. फोकस ऑन योर चाइल्ड स्ट्रेंथ्स. अगर बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता है, मैथ्स में वीक है, तो उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है. हेल्प बिल्ड अदर स्ट्रेंथ्स. उसको क्या अच्छा लगता है, वो एक्टिविटी आप 5 मिनट्स के लिए ट्राई कीजिए. डू नॉट क्रिटिसाइज और गिव पिटी कि नहीं बेचारे से नहीं हो रहा है, जाने दे. Give them opportunities for success in things which they like. Teach them things in small steps. कभी कभी हम बहुत ही बड़े आउटकम्स एक्सपेक्ट करते हैं and we miss out the small outcomes कि बॉल को ऐसे पकड़ना है या बैट को ऐसे पकड़ना है. We expect them to get it without any practice. So children tend to give up easily. Show them that you believe in them. Tell them repeatedly it is okay to make mistakes. इट इज ओके अगर आप 5 बार ट्राई करोगे और गिव अप कर दोगे, बट आई स्टिल बिलीव इन यू कि आप कर सकते हो. जस्ट ट्राई वन मोर टाइम. हाउ डू वी नो वेदर आवर चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम what? Like you said, if the parent is feeling annoyed, तो बच्चा is seeking attention. If the parent is feeling angry, provoked, threatened, then the kid is seeking power. If the parent is feeling very angry, very hurt from inside, then the child is seeking revenge. And if the parent is feeling frustrated, hopeless, abhi kuch nahi ho sakta hai, main thak gayi hu, then there are chances that the child is feeling inadequate. So what works with one child may not work with another. जैसे कि कुछ बच्चे स्लो टू वार्म अप होते हैं, कुछ बच्चे डिफिकल्ट होते हैं, कुछ बच्चे हैप्पी टू गो लकी होते हैं. एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद अ डिफरेंट टेम्परामेंट. एवरी पेरेंट हैज अ डिफरेंट टेम्परामेंट. So something that worked with your older child may not work with the younger child. Something that worked the last time may not work again this time. So जो मैंने आज टेक्निक्स बताई है, tend to use it if it fits into your family values, standards, child's temperament, developmental level, and situation. Have realistic expectations. Allow your child to make mistakes. Tell them it is okay to make mistakes, that mistakes don't define them, that you will still love them if they fail or if they misbehave, but keep encouraging them to become responsible. And you can select any method, any technique which you feel comfortable, which suits your family, but just try to be consistent with any technique that you adopt. So temperament and the maturity of the parent and child influence whether or not there will be conflict. हमें parenting style की कोई जरूरत ही नहीं है if the बच्चा is listening to us or is happy or go lucky, right? So मेरी जो parenting style है, if I am difficult, there are high chances कि मेरा easy going बच्चा भी मेरे साथ difficult होने लगे. So पेरेंट और चाइल्ड की पर्सनालिटीज हमें एक दूसरे को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करनी चाहिए. ज्यादातर मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे डिफिकल्ट होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, एंग्री होते हैं, उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स ज्यादा एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. विद तो वो साइकिल और वो चक्कर चलता ही रहता है. तू मुझे ना बोल रहा है, मैं तुझे ना बोलूं, और वो साइकिल कंप्लीट होता रहता है. So avoid doing that. If your child is having a difficult behavior, try to be a more authoritative parent to reduce conflict. Parent stress level influences how they react to their child's misbehavior. Zyadatar a 4-year-old is behaving like a 4-year-old. A 10-year-old is behaving like a 10-year-old. But just because parents stressed होते हैं, घर का माहौल ठीक नहीं होता है, या ऑफिस में कोई challenges होती है, तो पेरेंट का स्ट्रेस बहुत हाई होता है, तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं चाइल्ड के मिसबिहेवियर की वजह से, and then that leads to a negative outcome. Like I said in earlier, on today's presentation, that parenting is nothing but interaction of your personality and your child's personality and the stress levels you both are going through.
direct discipline, consistent discipline is more effective. And parents need to set boundaries and limits. And children want them. That is very, very important. कि हमें firm रहना है, हमें kind रहना है, हमें respectful रहना है, और हमें consistent boundaries practice करनी है. I hope the session was helpful. It's time for question and answers now. किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो जरूर पूछ लीजिएगा. वेरी नाइस सेशंस तन्वी मैम, वेरी गुड. Thank you. या किसी को पूछना है कुछ? Any questions? Hello? Yes, Vaibhav, tell. Yes. Okay, so authoritative होना है ऐसे आपने कहा है, तो क्या extent तक authoritative हो सकते हैं? How old Especially is with the the child? difficult. Okay, so not I do not have children, but just in case like मतलब toddlers के साथ कैसे हो सकते हैं, teenagers के साथ कैसे हो सकते हैं, और mid school going के साथ कैसे हो सकते हैं? Three scenarios. So see, authoritative parenting style for toddlers. So toddlers are basically having realistic expectations. कि toddlers को आपको no बार बार repeat नहीं करना है. You tell them what to do instead. अगर आपने decide किया है कि screen नहीं देना है, chocolate नहीं देनी है, तो you have to be firm. You have to not give in. You know, you have to say sorry. आप मोबाइल नहीं देख सकते हो, या सॉरी मैं आपको टीवी नहीं दे सकती हूँ. सो यू हैव टू बी firm and loving in setting rules which keep them safe, which is very important, because what toddlers need is they need limits that keep them safe, right? That is one. Second, and of course, you can only get adequate self-control only at 7 years of age. So our main goal as a parent for a toddler is to inculcate good habits, is to keep them safe, be firm, and be loving with them most of the time. Second is authoritative parenting also means getting a lot of knowledge on milestones, right? Like how will a 7-year-old behave, या 7-year-old का attention span क्या होना चाहिए, या 7-year-old का screen time क्या होना चाहिए. So you have to set consistent boundaries for even a 7-year-old or a 10-year-old by being firm and consistent. Like you can give choices to a toddler also. कि ठीक है, you want to play with this toy, you want to play with that toy. You want to eat this or you want to eat that. There has to be a mutual give and take. Same thing is for middle school children. You know, you give them choices, you remain consistent, you negotiate, you give them a lot of appreciation when they are behaving well. You ignore some of their misbehavior. Like if you have noticed a middle school child, you know, getting up again and again, लेकिन किसी को harm नहीं हो रहा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, you can ignore that behavior. If you see few times a child is cutting you while you are talking, you can ignore some behaviors, okay? With teenagers, what they need is, they need a lot of respect. So, and they get influenced by your behavior, not by what they talk. So they will watch by your actions, not your words. So if they see you going for a walk, there are high chances they will go for a walk. If they see you eating healthy food, there are high chances they would like to eat healthy food. So with teenagers, they need a lot of respect. You cannot disrespect a teenager in front of their aunt, in front of you know, their grandparents. You cannot bad mouth about them in front of their teacher. So avoid doing that. And catch them being good at any age. Being firm and being loving also means that you are appreciating any behavior that you want to increase can be appreciated by simple comments like, अच्छा मुझे अच्छा लगा आप 10 मिनट तक होटल में बैठ के कलर कर रहे थे. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल आप इतने सारे मेहमान आए थे, आपने सबको सर्व किया, आपने सबके साथ मिलके बात की, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा, आपने कोई नई एक्टिविटी ट्राई की. Unfortunately, Indians are very low on appreciation, you know. So I really think if we start appreciating small good behaviors, even with our family members, not just our kids, and see how our relationship
and compliance, changes. I hope that answers your question, Vaibhavi. Yes, it does. Just one more question. अगर appreciation use करते हैं, तो क्या उस पर dependency बन सकती है? If it is done excessively, yes, definitely. If it is done excessively, yes, then those parents, so those kids also grow up with a lot of validation कि मैंने आज स्कूल में present किया लेकिन टीचर ने मुझे very good नहीं किया, या मैंने आज मीटिंग में PPT बनाई लेकिन बॉस ने मुझे नहीं बोला बहुत अच्छा हुआ है. But the intention here was, connection and appreciation should be more than constantly picking on your child. Yes. So the Okay. Thank you equation so should much. be balanced. Yeah. Yeah. Yes, Ravi. बच्चे के एज के अनुसार पेरेंटिंग स्टाइल चेंज होनी चाहिए क्या? So the core value should remain the same. Okay, so you can take into a what do you call कि हाँ ये एज पे वो चॉकलेट मांगेगा या ये एज पे उसको अपने फ्रेंड्स के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो you have to be flexible. Okay, that okay, he likes going because he's 10 years old, he wants to go niche and play more often, which is a good habit, right? So you can have this goal and be firm with it. So the bottom line is you have to remain firm and loving. जो चीज आपकी फैमिली में allowed नहीं है, don't try to give in or negotiate. Okay, और मेरा So दूसरा your सवाल ऐसा है, parenting practice will change as your child will grow up, right? जितना मैं अपने toddler को control करूंगी उतना मैं किसी और को control नहीं करूंगी, इसको इतना monitoring नहीं लगेगा. I will take a back seat, right? So the goal is you have to remain firm and loving. Like as your child grows up, you will have to give them more freedom. I'm sorry, I was cutting you. You were trying to say something? yes. मेरा दूसरा सवाल ऐसा है, तुम्हाला आणखीन काही विचार? हेलो. Yes. हाँ, मेरा दूसरा सवाल ऐसा है कि ऐसी कोई टेस्ट है क्या जो आइडेंटिफाई हो सकता है कि पेरेंट ऐसे है, पेरेंट की स्टाइल पता चले? हाँ, of course. साइकोलॉजिकल टेस्ट है क्या? हाँ है ना, ऑनलाइन there is a parenting style questionnaire, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ. Okay, thank you, ma'am. Yes, I can share the test with you and you can do it. Yeah, sure, ma'am. Any more question? Oh, very nice session, Any more ma'am. question? Thank you very Thank you, Anupama ji, for hosting me today. Thank you everyone for joining in today. And thank you everyone for your participation. Anupama ji, I'll share the test with you. You can share with Ravi ji. Yeah, sure, ma'am. Yeah, thank you very much coming for this session. Yeah, thank you. No problem. Thank you. Good evening, everyone. Have a great day. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, madam.